today we start with fluid kinematics. So I already defined this when we discussed about introduction part. So the simple definition of fluid kinematics is, now it is the branch of fluid mechanics that that describes the geometry of fluid motion in terms of displacement, velocity, and acceleration. Okay, or any other term that we derive from displacement and time. Okay, so that is fluid kinematics. So I repeat this definition again. So it is the branch of fluid mechanics that describes the geometry of fluid motion in terms of displacement, velocity, and acceleration, or any other quantity that can be derived from displacement and time. Okay, so that is fluid kinematics, or in simple way you can say this is the study of fluid which is under motion. Okay, the study of fluid which is under motion. Now this is without any effect of external forces. ठीक है, तो यहाँ पे external force का जो effect है वो नहीं आएगा. Now if we study all these motions with the effect of external forces, then that becomes fluid dynamics. Okay, so that is fluid dynamics. Now in fluid kinematics we use some terms. So those terms we put under the category of classification of fluid flows. Classification of, बेटा आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को सभी. Classification of fluid flows. Now in this, the first classification is uniform flow and non-uniform flow. Okay. Now say we have one pipe and some liquid is flowing through this pipe. Now if along this cross section, if we talk about the velocity along this cross section, so for different layers we have this velocity. Now say that is v. If along the cross section the velocity is same, okay, then from cross section to cross section again, मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes sir. Yes, sir. Okay. So we are here. So say along this vertical cross section, the velocity is same as v. Now if we see another cross section, the velocity is again same, that is v. So that means if in a flow the velocity along the cross section remains same, that is the uniform flow. Okay, so I repeat this: a flow in which the velocity of flowing fluid particles is same along the section, that is uniform velocity or uniform flow. Okay, so in this condition, you see the velocity is same along the cross section and also same from one cross section to another cross section. So that velocity we call as uniform velocity, and the flow is called uniform flow. Now if this velocity varies, so in actual case the velocity variation is parabolic along a pipe. It is maximum along the central axis and reduces when we move along the walls of the pipe. Now if this velocity varies, then it is non-uniform flow. Okay, so for non-uniform flow you can say the velocity of flowing fluid particles along the section and at all the section of the pipe is not equal, then we call that flow as non-uniform flow. Okay, across non-uniform का. I repeat this definition again. A flow in which the velocity of flowing fluid particles is not same along the section and from section to section, the flow is called non-uniform flow. ठीक है, अगर यहाँ से सेक्शन में यहाँ वेलोसिटी से v1 है, यहाँ v2 हो जाए, ठीक है, और from center if we move towards the wall of the pipe, again velocity changes, so that is the non-uniform flow. ठीक है, now I think the meaning is clear. Now यहाँ पे ये चीज ध्यान रखोगे, the cross section of the pipe is same. If cross section changes, तो वहां पे velocity तो change होगी. You have the pipe like this.
Okay. Now in this case, here velocity, okay, along the cross section is v1. Here along the cross section, the velocity is v2. If along vertical section the velocity is same, then that is also a case of uniform flow. That is also a case of uniform flow. Okay. Then the next fluid flow classification, that is turbulent flow and laminar flow. Okay. Now say we have again a pipe. Okay. Some fluid is flowing through this. If the fluid flowing through this pipe along definite layers. Okay. So in this case, the fluid particles which are on one layer does not move to another layer. The movement of particles from one layer to another layer is restricted. The particles are moving only along their own straight layers. So that type of flow we call as laminar flow. Okay. So I repeat its definition: a flow in which each liquid particle has a definite path. Okay. So you are able to hear me? आवाज आ रही है ना मेरी? Hello. Yes, sir. Are you? Yes, sir. ठीक है. So I repeat the definition of laminar flow. So a flow in which each liquid particle has a definite path. Okay. Has a definite path, and the path of individual particle do not cross each other. ठीक है. तो एक पार्टिकल का जो पाथ है, ठीक है, वो दूसरे पार्टिकल के पाथ के साथ क्रॉस नहीं होगा. So that is the laminar flow. Okay. Now if the fluid particles does not have a definite path and the paths of individual particles also cross each other, so that is something like this. ये ब्लू लाइन से शो किया मैंने. So that is a turbulent flow. Okay. So you can say a flow in which each liquid particle does not have definite path. Okay. And the path of individual particle also cross each other. So that is turbulent flow. Okay. Now the other name for laminar flow is streamline flow. Okay. Laminar flow, this is also called streamline flow. Okay. So this is another category of fluid flows. Now the third category of fluid flow is steady and unsteady flow. The meaning is, okay, now say here we have a pipe again. Some liquid is flowing through this pipe. Okay. So here we have one container. Okay. So say in time t, we'll collect here in this container the mass m. Okay. We collect the mass m in this container. Okay. So now for steady flow, you can say a flow in which the quantity of liquid flowing
पर सेकेंड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी अगर आप टाइम लोगे उस टाइम में द मास रिमेन सेम। ठीक है, सो से फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, द मास इज m। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद फिर उसी टाइम के लिए आपने देखा उस पाइप में से जो मास फ्लो हो रहा है दैट इज अगेन सेम। So quantity of liquid flowing per second is constant, then that type of flow we call as steady flow. Okay, so steady flow will be a uniform or non-uniform flow, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, now if this quantity of liquid flowing per second is not constant, if it is not constant, so that we call as unsteady flow. ठीक है, so if the quantity of flowing fluid is constant, that is steady flow. If the quantity of liquid flowing per second is not constant, that we call as unsteady flow. ठीक है, तो यहां तक जो डिफरेंस क्लियर है आपको, टोटल 6 टर्म्स हमने डिस्कस करी हैं। सो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीस 6 टर्म्स इज क्लियर। सो दो 6 टर्म्स आर, सर ये यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म भी हो सकता है स्टेडी फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, मान लीजिए कुछ इस तरह से फ्लो है, ठीक है, बट फॉर टाइम इफ कलेक्शन इज सेम एज m, ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ फ्लो वी कैन आल्सो कॉल एज स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो अगर ये यूनिफॉर्म है पाइप के अंदर से और कलेक्शन सेम है, देन वी आल्सो कॉल इट एज स्टेडी फ्लो। मतलब नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म से स्टेडी और अनस्टेडी की कंडीशन में डिफरेंस नहीं आ सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो यूनिफॉर्म फ्लो कैन बी स्टेडी, यूनिफॉर्म फ्लो कैन बी अनस्टेडी। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कैन बी स्टेडी, नॉन यूनिफॉर्म कैन बी अनस्टेडी। ओके, ठीक है बेटा। सर अनस्टडी फ्लो के लिए पूछा था सर, अनस्टडी फ्लो के लिए कौन सा होगा, अनस्टेडी भी कोई यूनिफॉर्म भी या हो नॉन सकता है, यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म भी अनस्टेडी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी अनस्टेडी हो सकता है। ठीक है ना, अनस्टेडी का मतलब है कि मान लीजिए आपने ये कोई पाइप में फ्लो हो रहा है, यहां अगर मैं इसी फ्लो की बात करूं, ठीक है, आपने 1 मिनट में देखा इसमें जो वाटर कलेक्ट हुआ है दैट इज 10 kg। कुछ टाइम बाद आपने फिर देखा 1 मिनट में और वाटर जो आपके कलेक्ट हुआ दैट इज 10.5 kg। दिस टाइप ऑफ फ्लो इन एनी पाइप इज अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, ओके, जो कौन था बच्चा जो भी पूछ रहा था? यस सर, यस ओके, सर मैं ये पूछ रही थी कि नॉन यूनिफॉर्म तभी होगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है देन आल्सो इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। जो ओके एक्चुअल हमारे पास फ्लो है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके सर, यूनिफॉर्म इज द आइडियल कंडीशन। ओके सर। ठीक है, नाउ द अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज द फोर्थ वन, ठीक है, दैट इज कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है, एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक, सो कंप्रेसिबल फ्लो मींस ए फ्लो इन विच वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एंड thus the density of flowing fluid changes during the flow। ठीक है, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी उसकी फ्लो की चेंज होगी। इफ दिस कंडीशन exists during the flow that we call as compressible flow। So I repeat it again, a flow in which volume and thus the density of flowing fluid changes, so that we call as compressible flow। Okay, now if the volume and density of flowing fluid does not change, that is so I don't know why the screen is hanging। Okay, so now I think the meaning of compressible and incompressible is clear। So all the gases we call as incompressible flow, all the gases having the incompressible flow, and normally in all the liquids we have incompressible flow। ठीक है, जो लिक्विड्स का फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा और जो गैसेस का फ्लो है नॉर्मली दैट इज कंप्रेसिबल। ठीक है, किसी को डाउट इसमें मीनिंग में? नो सर। नाउ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो इज फिफ्थ वन, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कंटेनर है आपके पास, मैं उसका टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और उसमें ये कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, इसमें मैंने मैच स्टिक डाली है।
ठीक है, और मैं इस कंटेनर को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ दैट मैच स्टिक कैन आल्सो रोटेट along with the fluid of the container. तो उसकी जो रोटेशन है, that rotation is of two types. Okay, the first one is the orientation of this matchstick changes. The second is if I rotate that container, the orientation does not changes. So what is orientation? आप कोई भी आप मैचस्टिक उसमें ओरिएंटेशन मतलब मैं ओरिएंटेशन जैसे ये मैंने आपको दिखाया है, दिस वन यू कैन सी, दिस इज अ मैचस्टिक। ठीक है, ये जो है दिस इज अ मैचस्टिक। ठीक, now when this container rotates, then the fluid within the container rotates. Now this matchstick जो पहले ऐसे थी, now it moves to like this, then like this, then like this. So this is the orientation of this matchstick. ठीक है या नहीं? ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, here also liquid particles or fluid rotates along with the container, but the matchstick does not rotate. उसकी जो orientation है वो change नहीं हो रही। ठीक है, the orientation of this matchstick is same. तो दो तरह के फ्लो आपके पास हो गए, one in which orientation of this matchstick changes, मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है? अब स्क्रीन है हो रही है बार बार, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है इसके पीछे रीजन है। मैंने भी नेटवर्क का चेंज किया है सेटअप थोड़ा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ना? Yes sir. Yes sir. तो हम डिस्कस कर रहे थे रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। सो दिस टाइप ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन हाउ द पार्टिकल्स बिहेव विद इन द रोटेटिंग फ्लूइड। कंटेनर के अंदर फ्लूइड को अगर आप उस कंटेनर को रोटेट करोगे तो फ्लूइड भी रोटेट करेगा, और फर्दर उस रोटेटिंग फ्लूइड में जो उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर वी हैव आइदर रोटेशनल सर आपकी आवाज कट रही है। और इरोटेशनल फ्लो। आवाज कट रही है? नाउ आई रिपीट इट अगेन। नाउ द बिहेवियर ऑफ रोटेशनल irrotational flow depends upon how the particle behaves when they are in rotating position. कंटेनर है, उस कंटेनर को हम रोटेट करवा रहे हैं, उस कंटेनर में जो फ्लूइड है उसके पार्टिकल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दैट क्लासिफाइज द रोटेशनल और irrotational flow. If those particles rotates about their own axis, they are changes its orientation, we call it as rotational flow. If the particles do not change their orientation within the flow, that we call as irrotational flow. ठीक है, now I write its definition. So you can say a rotational flow is a flow in which fluid particles also rotate. ठीक है, fluid particles also rotate about their own axis, or you can say these particles have some angular velocity, have some angular velocity about an axis. ठीक है, so that type of flow we call as rotational one. ठीक, if the fluid particles don't rotate about an axis, ठीक है, or you can say they have not some angular velocity about an axis, so such type of flow we call as a rotational flow. Okay, the meaning is clear? सर Or I repeat it again? डायग्राम में आप इमेजिन करिए एक फ्लूइड है आपके पास, एक बकेट है, ठीक है, बकेट के अंदर वाटर है, उस वाटर में आपने मैचस्टिक को डाला, माचिस की तीली को जब आपने डाला, तो जब आप उस बकेट को रोटेट करवा रहे हो तो माचिस की तीली दो तरह से उस बकेट में रोटेट कर सकती है। द फर्स्ट कंडीशन इज इट चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे अपनी ओरिएंटेशन जो है अपने एक्सिस के अलोंग चेंज कर रही है, और सेकंड कंडीशन नॉट चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ मैचस्टिक अपनी एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन चेंज कर रही है, दैट वी कॉल एज रोटेशनल वन, और यहाँ चेंज नहीं करेगी, दैट वी कॉल एज इरोटेशनल फ्लो। ठीक है,